Yes, we'll start. So how's the training going on? Namaskar, sir. Namaskar, Yes. beta. How's the training going on? Training is going good, sir. Lot of exhaustion, हाँ, but lot of learning in the same time. इतने दिनों से कहाँ गायब थे? हैक्टिक शेड्यूल चल रहा है क्या? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। सुबह 4 साढ़े 4 बजे से उठ के फिर वो रात तक चलती रहती। You have to take care of your health there, physical health, बिल्कुल। because there are a lot of injuries during training that you need to take care. Okay, we'll have 15-20 minutes formal. When is your interview? 3rd of Feb. 3rd Feb. When are you coming to Delhi? Sir, on first night it would be second. Okay. Just midnight. They Almost don't 0 leave. days they gave you, huh? And Yes. how much you scored last year in interview? Not good, sir. 146. And still you got IPS? Yes, sir. 820 in main. 812. And how much in GS and all? Higher than rank 16. अब उसमें क्या ही घुसेंगे अपन, छोड़ो। उसमें कोई फायदा नहीं है, छोड़ो। अब इंटरव्यू में बढ़ाएंगे इस बार, वही बचा है हमारे हाथ में। सर फॉरेस्ट में 180 आया था, फॉरेस्ट सर्विसेज में इंटरव्यू में। CSE है, मूडी पैनल मेंबर्स, मूडी मार्क्स। Welcome to that understanding of that part. हाँ, मतलब एक सर वो ब्लंट रियलिटी था, बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। बट अभी नाउ आई एम ग्रेटफुल कि एटलीस्ट अगर वो नहीं होता, एवरेज मार्क्स मिल जाता, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू एंजॉय दिस IPS ट्रेनिंग. This is so exposing, so good. This will also help you into if you will go into AS, so you will feel that AS is a super simple job. You will. Okay. So your good name is Durga Prasad Adhikary. Yes, sir. What Adhikary means? Adhikary means a position of authority. Okay. In the literal sense. So you are already in a position of authority, and now your surname is also position of authority. Trying to be a good Adhikary, learning all the attributes. Good. So you are working right now, or you are in training, right? Yes, sir. I am training. You are enjoying the training of IPS? Yes, sir. It's a lot challenging, and I am able to discover that I have a lot more potential than I thought I had in the previous time. What are you learning there? The number of things. It is like I have been able to realize that I am physically much more capable than what I thought, be it running or stretching. Apart from that, knowledge of IPC and CRPC and the evidence, forensics is also there. In the outdoor, there are a lot of the drill part, the Savdhan, Vishram, and all those things. Along with that, the weapons training. The weapons training is also very interesting. Okay, which all weapons? Sir, there are a lot of weapons like the revolver, pistol, and all those things. The carbine, MP5. Okay. Can you see any impact of Russia-Ukraine war on these weapons which we are importing from Israel or Russia? Can you relate these things? I'm really sorry, sir. I'm not aware of that. I will read about it. Okay. Do we import small weaponry from Israel or Russia, or now it is indigenous? Not sure about it, sir. But back in previous times, we were importing. About the current thing, I'm not. Okay. Tell me one thing, that in terms of the mobility of India, vehicle mobility. Earlier, we were focusing upon BS norms, BS4 to directly BS6. Then we shift to e-vehicles, and then we shift to the hydrogen now. Yes. So don't you think that there has been a lot of variability in mobility, and the private sector is not able to focus that which type of they need to do R&D in which type of vehicles? Yes, sir. In the initial days, I felt that being working in an automotive sector too, I felt that there were some confusion regarding, because at once upon a time it was said that CNG is the future for the near thing, but with other things, I think the situation is going good. So where we should focus upon more? E-vehicles? Where we should focus more on e-vehicles or hydrogen or conventional BS? I feel that there should be a phased manner. The focus should shift in a phased manner. Rather, it should not be knee-jerk.
if my opinion is concerned, I feel the first priority should be, as of now, will be to CNG to meet the climate exigencies. And once we are able to make affordable electric vehicles, then we should shift to electric. And ultimately, the future is hydrogen vehicles. So it is a thing of around 2 to 3 decades as of now, to ultimately get. And what are the target of India in terms of e-vehicles? I'm not able to recollect the data as of now. Really sorry. So by 2030, we are planning 100%. Yes. Okay. Have you seen recently there has been a report from USA, a research bank of USA, and they have done some analysis of one Indian big corporate. No, sir, I'm not Have aware you of. followed that news related to No, sir. Adani Group? Yes, yes, sir. Recently, in back maybe 2 to 3 days. Yes, sir. Yes. What is happening there? Do you think it's a failure of corporate governance, or it is not a big issue and only the Western media is making it an issue? Sir, as of now, seeing the both the sides, the opinions of both sides, I feel a thorough investigation needs to be done, because the Adani Group is saying there are some narrow areas in the report. So after the investigation itself, only we can be able to say whether it is a failure of corporate governance or not. However, in the meantime, the speculations that this report has generated has led to a lot of economic instability. So care must also be taken that such things should not be released or something without thorough investigation. Hmm. So how can we ensure that such incidents will not happen again in future? Uh, so these things can be can be ensured by having a thorough regulatory, tight regulatory grip, basically on those sensitive news, because which have the capability to upside down the economic market. Uh, uh, what I will say is the clear government guidelines as such, and the internal regulatory mechanism of this big firm, that they must thoroughly check these reports before release. Hmm. And maybe an opinion of the party concerned can also be taken. They must be given a chance to express their own opinion, because in this case, Adani Group had no chance of expressing their own opinion. Maybe if this would have been done, a lot of misunderstanding could have been avoided, if there is any. Okay. So is the cadre has been allocated to you in IPS? No, sir, not yet. Not Okay. Suppose you get allocated to your home cadre, still you want to change your services from IPS to IAS? yet. Sir, I have not thought about that as of now, because once the cadre Suppose is we will allocated, ask you to think about it right now. I will need some time to think about it, sir, because it is a life decision. And regarding, I have to balance in my priorities and all. I will need maybe a couple of days, because I don't want to get these things in hurry. Okay. And suppose you get allocated to IAS with your home cadre, will you change your services? Yes, sir. In that case, I'm pretty sure that I will think. Why? Basically, this is because somewhere I have felt that when I have talked to many of my IPS seniors and all, somewhere the role of IAS is mostly, in many fields, it is of the developmental role. For IPS, the role is law and order and ensuring justice to the people, which is one of the pillar of administration. The other pillar is the developmental work in the fields of education, health, employment. So when I had thought of joining these services, while I left my job, I had thought of going into this development field. So definitely, if I'm getting allocated to Indian Administrative Service in the state cadre, I will do join to ensure this fulfill this Okay. trust. Okay, good. Tell me, have you heard of this commissionerate system, which is nowadays coming into very metropolitan cities and tier one cities? Yes, I have heard about. Can you share 3-4 differences between commissionerate system and the conventional system? Yes, the conventional system is mostly called the dual system, because here we have the civil administration is led by the district magistrate, who is both the executive magistrate part and the revenue revenue part. But and we have, for the law and order, we have the superintendent of police, who is the in charge of law and order of the district.
However, in the commissionerate system, the commissioner is given the additional charge of additional district magistrate, charge of additional district magistrate that is given. In the dual system, the commissionerate system has evolved as uh, is an evolution of the dual system wherein the population is too large and there is a need for centralized decision making so that quick decision can be made, and there should not be no confusion regarding the jurisdictional issues, because if I quote an example, earlier when in Odisha we have Katak Bhubaneswar commissionerate system. Earlier there were issues of whether it is my jurisdiction or your jurisdiction, but after the commissionerate system, the inter area crimes have also reduced. So this is one of the benefits that we get in commissionerate system. So these are some differences with respect to So dual. do you think that we need to promote commissionerate system? Uh, Sir, in areas which has large population, which requires quick decision making, which has effect on the what you say like if impact of terrorism, because in cases of terrorism, commissionerate system is well equipped to handle that because of the quick decision making, the power that is given. So these are some of the parameters where commissionerate system should be implemented. However, in not all districts it should be implemented. The dual system would work fine for the districts which has moderate population and with less or moderate crime. Hmm. Tell me that the police has been considered as an implementation of law and order, but when it comes to true implementation of law and order, it is a dual relationship between the society and police personnel. So a lot of states have come up with various initiatives by the police to improve their relationship with the general society. Yes. Can you name any 2-3 such initiatives which these police in various states have taken? Yes, sir. To remember, I remember the community policing initiative of Kerala, and in some places it is in maybe northeast it is called Mira Paibo. That is also a community policing system wherein the police goes on to talk Where with in them. which state? No, for Kerala it is community policing. In Mira Paibo, it is one of the northeastern states. I don't remember the name itself. So that is that. In the community policing system, police, the beat constables talk to the people of the localities, and they are aware of this thing. The another initiative that they have taken is the grievance redressal system that is there. That is a part of the policing system. But some districts, especially in Odisha, if I remember, one Sundargarh district is there. There they have made it much more frequent and accessible to all sorts of the people. There is another initiative that was taken by the SP of Ganjam district, Sri Saravanan Vivek M, wherein he made it a point that the physically disabled people need not to go completely inside the office. Rather, the SP would come out to meet to the people. So these are some of the exemplary things that is being done to send a message across the society that the relation between police and the general society is in. Okay, good. Tell me that you have mentioned the roof gardening as one of your hobbies. So can you suggest us few plants, few flower plant and otherwise which we should grow on our houses, Yes. especially for maybe Delhi and then maybe for Bangalore. Few plants for Delhi and few plants for Bangalore, Yes, sir. depending upon the climatic conditions. Yeah. Basically, I'm from Odisha and I have done that in Odisha, so I'm aware of that. But I can tell you some plants that are grown in winter because and that is there for the Delhi. Bangalore, it's mostly the climate, the temperature is bit below the average temperature of India. However, in Delhi, it is extreme. So if you consider the Delhi, the plants like the cactus, the aloe vera, these things would survive even if there is extreme of the As an aloe vera, if a person like me who is not having a habit of roof gardening knows, tell me something which, if you are pursuing it as a hobby, you have to tell me some more deep answer of this question. no, I'm aware about the things in Odisha because I had done Tell that. me something about Odisha, then which all plants you want to grow in that region. Yes. So what I used to grow was the dhania, pudina, the coriander, pudina, methi, and many times the chili plant. Apart from that, in the flowering, I used to grow the marigold, and also marigold is a winter plant basically, and the jasmine plant that I used to grow. Okay.
You also have a habit of reading books on Indian philosophy. Yes. Have you read any book recently? No, sir. Recently, I haven't read, but before joining the service, I have read. Okay. Okay. Anything else which you want to share with us? No, sir. Nothing else. Okay. ठीक Thank you so the much. formal part is over. I'll be very blunt and honest with you. Yes, sir. अगर आज मुझे मैं आप पैनल को बोल रहे होते और मैं मार्क्स दे रहा होता मैं आज भी तुझे 160 देता. ठीक है. You know the reason? मतलब बहुत अरे भाई ऑल इंडिया सर्विसेज में जाना है तेरे को तो कह रहा है होम कैडर छोड़ के जाऊंगा या नहीं जाऊंगा मुझे नहीं पता है. तो क्या बात कर बाद में देख लेंगे जो करना है नहीं करना. आज तो बोलेगा ना आई इंटीग्रेटेड कंट्री है यार ऑल इंडिया सर्विस में बैठा दो. हाँ. उसमें सोचना क्या है कि मुझे होम कैडर अगर यहाँ मिल रहा है और आईएएस कहीं और मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा. 100% जाऊंगा. नॉर्थ ईस्ट मिलेगा वहां भी जाऊंगा. नागालैंड मिलेगा वहां भी जाऊंगा. वो तो एकदम फेस में निकलना चाहिए था आपके कि नहीं नहीं आई एम रेडी टू सर्व एनी पार्ट ऑफ माय कंट्री एनीवेयर इफ आई वांट टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व आई विल बी हैप्पी टू गो देयर. सर ये मेरा दिल में भी है बट वही ना लास्ट टाइम मतलब कुछ बोले थे कि यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट. कौन बोला था? ऐसे नहीं बोला उनको. मतलब कुछ में बोले थे कि मतलब अगर तुम्हारे दिल में भी ये बात है बोलोगे तो उनको लगेगा दिस इज इम्प्रैक्टिकल एंड ऑल दोस. कौन सी बात? कि मतलब जो भी मिलेगा मैं चला जाऊंगा वो वाला. अरे तूने भरा है ना इसमें. हाँ मतलब दिल में मेरा बोलेगा ही ना. मेरा भी दिल में वही है सर बट वही है आई वाज ट्राइंग टू बी बिट आर्टिफिशियल. ऐसा थोड़ी चलेगा. आप तुम फिल ही कर चुके हो जब तो फिर खत्म हो गया ना काम. मतलब उसमें तू झूठ बोलेगा मतलब तू बोल रहा है झूठ वो भी अदर साइड के लिए. वो trust me they will give you less than 150 marks in such questions. An IPS officer who is already into an all India cadre service and thinking about that IAS मिलेगा तो home cadre छोड़ के जाऊंगा and this is a very big decision I need few things. Damn sure they will give you very less. फिर आप बोल रहे हो कि कम्युनिटी पुलिसिंग नॉर्थ ईस्ट के किसी एक स्टेट में होता है. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम. भाई क्यों मतलब वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन के एलिगेशन लगते हैं इस पार्ट में कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या चल रहा है नहीं पता है और अपन उसको इतना कैजुअली बता रहे हैं. इन वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इट इज देयर. केरला तूने पूरा बताया, उड़ीसा तूने पूरा बताया, बट नॉर्थ ईस्ट आया तो इन वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. कैसे? अगर आज इंटरव्यू होता इन दोनों से 50-60 नंबर कट गए होते तेरे बस सिर्फ इन्हीं 2 सवाल से बस. बाकी बहुत बढ़िया है. नॉलेज तेरी अच्छी है. इतने अटेम्प्ट हो चुके हैं सर्विसेज में ऑलरेडी है. कॉन्फिडेंस पूरा है. पिच अच्छा है. फ्रीक्वेंसी अच्छा है. सोचता वो सब अच्छा तो तुझे पता है. बट ये वैल्यू के लेक्यूनाज हैं. जी सर. 140 जो पिछली बार आया है वो हो सकता है ऐसा ही कुछ कांड करके आया तो नहीं उसमें ऐसे टाइप के सवाल नहीं थे सर. मतलब तो फिर 146 तो आ ही नहीं सकता ना. फिर क्यों आया 146? बालों का कुछ कारण हो सकता है सर. मैंने शिखा जो है ना तब ऐसे पूरा बाहर से शायद दिख रहे थे जल्दबाजी में था बट पता नहीं. वो नहीं हो सकता यार. दैट कैन नॉट बी ए रीजन. वो तो तुम्हारा सीनियर वो यो छोटी सिंह ने भी तो रखा था. वो तो नहीं है. मेरा बहुत लंबा था. ठीक है चल जाएगा वो. अपन ऐसी सरकार में नहीं बैठे ना जो अगेंस्ट हिंदू हो. दैट इज एन कल्चरल यार. मतलब वो तो चलेगा ना. मैं एक बार रीजन नहीं होगा. मैं एक बार रिविजिट करूंगा सर. ये जैसे तूने बाय डिफॉल्ट ये दोनों चीजें बोल दी मे बी यू हैवंट रियलाइज इट बट इनमें नंबर कटेगा ही कटेगा. मतलब which shows that you have so much internalized that thing कि अपने को रियलाइज ही नहीं हो रहा. अरे यार ये हो गया. ऐसा ब्लंडर नहीं करेंगे यार नहीं तो गड़बड़ होगा काम. लास्ट टाइम ये जो हाँ ठीक है सर समझ गया. ये वाले पार्ट में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. बाकी तो नॉलेज ठीक ही है. 4-5-6 दिनों में किस पे ही काम करना है. पूछो बाकी कुछ तुम्हें पूछना है तो बताओ. सर मतलब अगर जैसे ये वाला सब्जेक्ट ये वाला टॉपिक है जिसमें ऐसे होता है वैसे और कुछ है सर आपके दिमाग में जिससे मुझे पता नहीं है तो कहाँ मिस्टेक कर देगा. हाँ मतलब जनरली नहीं पता. मैंने तो ऐसे ही पूछा था जैसे वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट तो पता नहीं. तू ऐसा बोलेगा नहीं बोलेगा. जैसे कुछ एक में पहले भी एग्जांपल दिया है मैंने कि कोई नॉर्थ ईस्ट कोई एफिशिएंसी वर्सेस मतलब एक एफिशिएंट बंदा वर्सेस ट्रूथफुल बंदा. तो ट्रूथफुल
मतलब करप्शन वर्सेस दिस, तो करप्शन हमेशा ऑफ रहेगा। तो कुछ जो नेचुरल वैल्यू सिस्टम में आ रहे हैं ना, वो ही रखने पड़ेंगे अपने को, अदरवाइज गड़बड़ है। जी सर। नेचुरल जी वैल्यू सिस्टम के अलावा वाले वो गड़बड़ है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो यार। पिछली बार वाली फोटो लगाई है तूने, जो पिछली बार डेफ में लगाई थी? सर ये वाला तब रिजल्ट आने से पहले फॉर्म भर दिए थे। अच्छा, ये फरवरी का होगा वो वाला पार्ट। वो उससे पहले फॉर्म भर दिए थे, बट वही चेंज नहीं कर पाया। अच्छा, ठीक है ठीक है, मोटा मोटी प्रिपेयर्ड ही है। हाँ हाँ जी, बस ये बिल्कुल सर। वाले, हाँ ये वाले ब्लंडर मत करना, हाँ तो अपन आई पहुंच जाएंगे 180 85 एंड ऑल पे। आईपीएस को बहुत ज्यादा तो देते नहीं है वो, हाँ तो 180 85 90 तक ला सकते हैं इजीली। हाँ, मतलब मुझे लगता है सर आई फाइव बीन गॉन बाय माय हार्ट तो ठीक आंसर देता है। हाँ ना, बिकॉज मतलब बाय डिफॉल्ट ठीक ही है ना। क्योंकि यहाँ पे भी सर जब वो पूछते हैं लोग कि मतलब कैडर अगर ओडिशा नहीं मिलेगा तो कहीं पे, तो मैं बोलता हूँ कि ऑल इंडिया सर्विस है, इसमें कैडर का क्या रोल है। तो जहाँ भी मिलेंगे जाएंगे, काम करेंगे। बट यहाँ पे आई ट्राई टू बी आर्टिफिशियल, तो समवेयर वही है, दिल की ये बात। खान साहब बिगाड़ते हैं एक तो बच्चों को, मैं बता रहा हूँ, ये फीचर सुन के हैं यार। एनीवेज ठीक है, इन दो चार चीजों पे काम कर लो, कुछ और होगा तो फोन पे व्हाट्सएप पे निपटा लेंगे, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव, और रिफाइनमेंट किसी में चाहिए होगा तो नंबर तेरे पास है, व्हाट्सएप कर लेना। बिल्कुल सर, और एक लास्ट है जो स्टांस वाला चीज आता है, जो मतलब पहले होता था कि मैंने देखा है कि बैलेंस आंसर देना है, बट यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ लोगों से जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है विद गुड मार्क्स, वो बोलते हैं कि स्टांस लेना ही लेना है, चाहे जैसा भी सवाल। तो इसको क्या करना है, मतलब वो डिपेंड बोलते हैं ऑन द पहले, क्वेश्चन, कुछ एक दो एग्जांपल दो कि कहाँ स्टैंड लेना है, जैसे एक दो मतलब कुछ सवाल पूछ। जैसे मैरिटल रेप यूसीसी हो गया, यहाँ पे तो स्टैंड लेना ही है ना वैसे। लेना है। हाँ। अब जैसे अगर मान लीजिए कमिश्नरेट सिस्टम और डुअल आ गया ये वाला, तो इसमें हाँ, बैलेंस चाहिए। बैलेंस को चाहिए है ना, स्टैंड जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां क्विक डिसीजन मेकिंग एंड ऑल, वहां कमिश्नरेट होना चाहिए, अदरवाइज ड्यूअल होना चाहिए। बट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादातर आईएएस है हाँ या नॉन बिल्कुल। ब्यूरोक्रेट है, तो दे वांट टू रिटेन दैट पावर। डुअल वी कैन सिस्टम। नॉट हैव वन साइडेड आंसर कि कमिश्नरेट ले आओ, हाँ 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 बिल्कुल। तो इसलिए वो बैलेंस करना पड़ेगा। सर लास्ट टाइम मुझे एक सवाल पूछे थे कि इज ओडिशा बैकवर्ड, मैं वही बोल रहा था कि सर पहले नहीं था, ये था। वो बोले रुक जाओ, टेल मीन यस और नो। हाँ सही बात यस, है। यस और नो, इज नो ही है ओडिशा ना बैक। यार। हाँ बैकवर्डनेस की डेफिनेशन क्या है? हाँ बैकवर्डनेस की डेफिनेशन क्या सिर्फ इकोनॉमिक है क्या? ये नहीं नहीं कल्चरली भी है, क्या सोसाइटी भी है, किसी और पैरामीटर्स में भी है। हमारा बेस भले ही कम रहा हो, बट इफ वी आर गोइंग इन अ फास्ट वे और फास्ट डायरेक्शन, हम बैकवर्ड कहेंगे ही क्यों? तो मैंने नो ही बोला था, बट इफ टीम डिड द पैनल डिडंट अप्रिशिएट, मैंने बाकी सब बोला था कि डिजास्टर मैनेजमेंट में वी आर डूइंग गुड, वुमेन एम्पावरमेंट में डूइंग गुड। एक चीज जो मैंने नहीं किया था, फैक्ट सब्सटेंशिएशन नहीं किया था, टू बी फ्रैंक, वो मैं इस बार करूंगा। बट मैंने नो ही बोला था कि मतलब इकोनॉमिकली भी हम बढ़ रहे हैं आगे, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स भी सब में बढ़ रहे हैं, बट नहीं तो बैकवर्ड। बट इसकी वजह से नंबर नहीं कटे तेरे, नहीं, मतलब आई वाज जस्ट आस्किंग। इसकी वजह से नंबर नहीं कटे, वो तो नो ही है, नो ये दैट इज नो। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नो सर, इतना ही सर अभी के लिए। आप बाकी होगा तो मैसेज। हाँ बाकी मैसेज करना, जब आओगे यहाँ तो मिल के जाना। ठीक है, 3 तारीख को है ना इंटरव्यू, उसके 3 तारीख को मिलते हैं शाम को। ठीक है सर। 3 की शाम को, 4 को मेडिकल है ना, वापस कब की जा रहे हो? सर 5 दोपहर। 3 की 5, शाम को मिलता है फिर तो फ्री है। ठीक है सर। हाँ ओके, या 4 की शाम को, वेन एवर यू आर कंफर्टेबल, है ना। तो मैं आपको सब मैसेज में एक बार मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय। अरे दिल्ली में टेम्परेचर कम है, ठंड है काफी, ठीक ठाक से लेवल की, उसी बिल्कुल। हिसाब से तैयारी करेगा ना। ठीक है बिल्कुल। भाई, मैं भी कल पुणे से आया था, मुझे लगा अरे क्या ही है, पुणे में टेम्परेचर 30 डिग्री, यहाँ हाँ पहुंचा 12 डिग्री। तो हाँ। वही गड़बड़ हो गया। ठीक है, चल ठीक है बेटा, ओके बाय। थैंक यू। ओके नमस्कार। बाय, हाँ।